Hello everyone. Due to some internet issues, I was unable to take the classes from the last 2 days. But again, I'm just back. So join as soon as possible so that I can start the session. All of you, join the session as soon as possible. Is am I audible to all of you? Please respond. Am I audible? So let's crack GATE ESE with India's largest online learning platform. Get the plus subscription now and start accessing unlimited and the recorded video lectures by India's top educators. So myself Ajay Das, I am MTech in Computer Science. I have experience of the 8 years and I have worked as a freelancer in the many reputed institutes of India from the last 8 years until now. In my career, I have almost trained the 20,000 plus engineering students for the computer science for GATE and training and placement. I have qualified the GATE exam 5 times. Along with that, I have also qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with AIR 8. So download the Unacademy learning app and start your preparation sitting anywhere, anytime. So what you will get? Once you will take the plus subscription inside the Unacademy platform, what you are going to have? This is the major question that always arise in anyone mind. So the first thing that you are going to have a daily live session. So in this scenario, you have to attend each and every classes on a scheduled manner and you will be get improvement day by day. The second thing is the structure courses. My dear friends, the meaning of the structure courses means you will be pre-intimated about your planning of the next 2 months. What syllabus is going to be covered in this 2 months, which faculties are there which are teaching the same subject. So like it. For example, suppose there are three different educator of the DBMS and you are announced that DBMS is going to be started by the different educators. So according to your choice, you can opt any one of the educator and you can start your preparation. So if due to some reason you are not able to capture some of the concept from the one single educator, what you can do, you can switch to the another educator and you can start your preparation. Means anyhow your classes is not going to be hampered or your concept will be clear. The third thing is the live test and quizzes. The meaning is you know about this because time to time the self evaluation is very necessary thing. So once you will appear for the live test and quizzes, you are just appearing in front of all the engineering students across the India. So time to time you can judge yourself what is your position, what is your rank across the India. So this is very necessary thing. And of course the unlimited access. My dear friends, unlimited access. Please remember this. You can access the video lectures again and again until you get the concept. Got it? So the next thing is learn with the top educators. Means this is the great weapon of the any organization. So these are the few of the educator that belong to the electrical, electronics, civil and similarly from the mechanical and electrical. My dear friends, remember one thing. If you are having a guideline under the India's top educators means no compromise in result. So if there is no compromise in result means no compromise in like if no compromise in quality then no compromise in results. So let's come to the GATE ESE. So my dear friends, under the GATE ESE there are various branches. According to your branch you can opt any one of them. Like suppose you are from the mechanical or electrical, production, chemical, whatever your branch is, already mentioned over here what the Unacademy is offering for the GATE and ESE. So according to your branch you can choose and you can get the plus subscription. But if you want to get the plus subscription, then there is a model of the fee structure. So here we have described some of the things. Like for the 1 month subscription, the chargeable fees or the applicable fees will be the 5,000. If you are getting the subscription of the 3 months, then the applicable fees will be the 12,500. And if you are looking for the 6 month subscription, your final fees will become the 20,000. But if you are going for the 1 year subscription, it is 25,000. So in any one of the cases, once you will use my code, that is the IFA. Once you will use my code, that is the IFA.
immediately you will get the 10% discount. Suppose your fees is 25,000. Suppose you are getting a subscription of the 1 year and your fees is 25,000. So once you will apply this code, you will immediately get the 10% discount, and after the discount your final fees will come 22,500. So I will advise, if you are really looking for the GATE 2000 like 21, even go for the 12-month subscription, because after that there are more many exam which is waiting for you. Okay, so my dear friends, let's come to the 24-month subscription. Already I have described all the scenario from the 1 month to the 12 months. Okay, starting from the year I have already explained all the things about the 12 month. But if you are looking for the, GATE 2022, what GATE 2020, or you think this is just your startup, then you must go for the 24-month subscription. In that situation, once you will compare the fees, there is a difference of only 5,000. Only 5,000. So your final fees will become the 30,000, and once you will apply my code, again the scenario is same. You will get minimum 10% discount. How much? You will get minimum 10% discount, and your final fees will become 27,000. My dear friends, in this nominal fees, no any institute of India with the guaranteed faculty can teach you. So always remember this. By this, for this particular courses, like for the GATE as well as for the ESE, of course for the computer science there is a GATE only, but if you will talk about the other branches like the electronics, electrical, mechanical or civil, there is the ESE also, whose syllabus is very very vast. So either you are preparing for the GATE or the ESE, your final application, so 40,000 for the 24-month course. And once you will apply my code, again you will get the 10% discount, and your final 27th. So before ending this just introductory session, I would like to tell you one more thing. This particular code which is written over here, AIEFA, this is not only applicable for the GATE and ESE subscription. If you are looking for the any other courses, or if suppose your known person, your friends are looking for the any other courses like the CAT, GRE, UPSC, banking, or your cousin brother, or your any like relatives are looking for the banking sector or IIT JEE NEET, you can refer them to use this particular code. In all the scenario, whatever the course is available inside the Unacademy platform, in all the scenario you are going to have a 10% discount. I hope you understand. You can go for the any one of the courses of the Unacademy. Now let's come to the subject for which all of you are waiting for. Okay, let's crack GATE at the rate of first attempt. My dear friends, in my lectures, what the best I can give you is to the proper approach to solve the numerical. Means most of the time what happen, even though the students have a basic concept, but still they are not able to attempt the question. The reason behind is they don't know how to apply their concept while solving the numerical. So in my lectures, I am going to give you a different approach to solve any kind of numerical. But in my today class, I am going to talk about the grammar, which is the part of the theory of computation. So I hope you people are little bit aware of the grammar, but still I will explain each and everything of the grammar, and then gradually we will move towards the numerical. Are you getting my point? And in between, because this is the series, in between we will try to connect the grammar language produced by the grammar and machine, the related machine, because for every different kind of languages there exists a grammar, or you can say for different grammar there exist a languages, and for each language there exists a machine. So in theory of computation we basically talk about, four kind of machine. I hope you have a knowledge about this. One is the DFA, second one is the PDA, third one is the LBA, and the fourth one is the Turing machine. So every machine has their certain capability. Means already we are studying about the theory of computation. It basically indicate every machine has limited computing power. So once we are talking about the DFA,
it has a very limited computing power, and that's why we have differentiated the languages. See, uh, once you will try to think upon one single question that why we are learning about the different languages in the single form, why we are not defining a single language. The reason behind is the different machine have a different capability, and to differentiate the computation capability of the machine, we basically derive four kind of languages. One language belongs to the DFA, which is called the regular language. The second language belongs to the PDA, okay, that is called the context free language. Third, relate with the LBA, that is the linear bounded automata, which is called the context free grammar, context sensitive grammar or languages. And the final language correspond to the Turing machine. And once you will learn about the Turing machine, there are two kind of Turing machine. One Turing machine that will halt for every input, and the language generated by such kind of machine is called the recursive language. But one another Turing machine is there which may or may not halt. What is the meaning of halt, or what is the meaning of in which situation the machine will not halt? We will talk about this later, because in my today's session I'm not going to deal with the different kind of machine, but in between I will try to connect the language and with respect to the machine, because GATE never ever asks only the questions from the languages. There are some of the questions where the languages are connected with the machine. So first of all, we will see what is the like what is the marks weightage of this particular topic. So my dear friends, from the GATE point of view, from the GATE point of view, in every year almost 2 to 3 questions were asked from this particular 3 questions. And if you will talk about the marks, then almost 4 to 5 marks. 4 to 5 marks it alone cover. Now you can think what is the importance of this particular topic, which is under the theory of computation. Are you getting my point? So after attending only 3 lectures, after attending only 3 lectures, you will be able to capture you will be able to capture 4 to 5 marks in your GATE एग्जाम. प्लीज काउंट इट, इसको काउंट करिए कि एक एक मार्क्स से, आप लोगों ने सुना है ना, बूंद बूंद से समंदर भरता है, ठीक है ना. तो एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट. सो my dear friends, as I told you, for the different machine we have a different kind of languages, and there exists a grammar for each kind of languages. So once we will talk about the languages or languages, then there are four kind of languages. There are four kind of languages. First one is the regular, second one is the context free, and third one is the context sensitive, text sensitive, and the fourth one is the recursive and recursively enumerated. See, these are two different kind of languages. In this situation, we have defined two different kind of languages. One is the recursive and the second one is the recursively enumerable. Of course, for this kind of language, we basically define a DFA, that is the machine, and for this we basically define a PDA, that is the push down automata. This one is the LBA, okay, that is the linear bounded automata. For the recursive language, we define machine with halt, with halt, and this one is the Turing machine that may halt, that may, are you getting my point, that may halt. So, and for every languages, welcome Vikrant, same timing Vikrant, that is the 10 o'clock.
10 p.m. Okay, so so we have a four different kind of languages, and in the last moment I have defined the two different kind of languages. One is the recursive, second one is the recursively enumerable. And for each languages there exists a grammar, and which is called, like, if you are talking about the regular language, then there is a grammar, regular grammar. Okay, the name is not differ. Okay, just remove the language and put over there the grammar. Like context free language, there is a context free grammar, context sensitive grammar. बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत ही जरूरी है. देखिए, अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम लोग, तो गेट जो है, अगर हम लोग ग्रामर्स की बात करें, तो गेट पहले दो टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करता है. यहां से कभी भी मीन्स 1% चांसेस है यहां से किसी भी क्वेश्चंस के आने का, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रामर. लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो यहाँ से 1% चांसेस है किसी भी प्रॉब्लम का आने का. बाकी का 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आपके बीएफए से होंगे, मीन्स रेगुलर ग्रामर से होंगे, दैट इज द रेगुलर ग्रामर, या आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से. देयर इज अ रीजन, there is a reason for everything. My dear friends, once you will go for the higher study, you will be able to realize, for every compiler design, for every compiler design, we basically use context free grammar, basically use context free. So learning a lot about the context free grammar becomes the most advantageous things. क्योंकि अगर आप लोगों ने कंपाइलर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, एवरी ग्रामर विच इज यू आर यूजिंग फॉर द पार्सिंग is the context free grammar. You are not picking any one of the grammar which belongs to the context sensitive or the regular recursive grammar. Are you getting my point? And that's why for the compiler design point of view, we basically talk most about the context free grammar. Now let's start the grammar, and then time to time I will tell you what is the regular grammar and how to give the definition of regular grammar, and then what is the context free grammar and what is the format of the context free grammar, and context sensitive, and then recursive. So everything we will discuss, but our more focused will be on the regular grammar as well as context free grammar. Got it? Now let's come to the definition of the grammar. See guys, see over here, the grammar G is defined by four tuples. How many tuples? Four tuples. I will explain each and every tuples. S, E, N, and okay, where S is equal to start symbol. Start is equal to set of terminal. What is this? Set of terminal. And N is equal to set of non-terminal. In between, we will look upon the various gate numericals, and P is equal to production. As the name itself indicates, that production rule means ये कुछ produce कर रहा है. क्या produce कर रहा है? The production rules is responsible to produce the strings. ठीक है ना? Production rule responsible to produce the string. The strings. So my dear friends, generally the set of terminals is indicated by the small letter. तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल लेटर से. और हमारे ग्रामर में ये बेसिकली होता है इनपुट सिंबल. व्हाट इज दिस? द इनपुट
Okay? Input symbol means which is the part of input. So set of non-terminal, it is basically represented by the capital letter. कैपिटल अब मैं ग्रामर लिखूंगा तो आपको हर एक बात समझ में आनी चाहिए कि मैं स्मॉल लेटर से क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूँ और कैपिटल लेटर से क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूँ. एंड द प्रोडक्शन रूल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द स्ट्रिंग्स एंड यू नो how to define the language. The language is nothing but set of strings, a set of strings. So the production rule will not only generate a single strings. There is a possibility it will generate nothing, or it will generate a single string, or it could be generate infinite number of strings. And that's why combining all those strings we will create a language, and those kind of language is basically called the language generated by the grammar G. Those kind of language is basically called the language generated by the grammar G. Now let's come to the example. First of all, I am considering very simple example like S2 AB and A2 AA slash epsilon and B2 slash. So this is the grammar I have defined over here. This is the grammar I have defined over. Now what I'm asking the question, I'm asking find language generated by grammar G. How you will read this? L of G means, is the L of G, it means language generated by grammar G. Got it? So already the grammar is given, and of course these are the production rules. So let's see here in place of a start symbol, S is the start symbol, so in place of a start symbol what we are considering, we are considering the S. Okay, and in set of terminals, so what are the terminals over here? Of course small a and small b, these are the set of terminals. Epsilon is never counted as a set of terminal because this is not a part of the input symbol. Okay, this is the supportive null strings. Okay, this is not a part of input symbol. So t is equal to small ab. Now what are the non terminals? Of course every time see over here, देखिए लैंग्वेज किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए उसके टर्म्स को नोटिस करना बहुत ही जरूरी होता है. टर्म्स को नोटिस करने का सेंस यहाँ पर ये है कि मैंने एस को स्टार्ट सिंबल बोला है, यहाँ पर मैंने सेट नहीं बोला है, क्योंकि अगर मैं सेट बोलता तो यहाँ पर एक से ज्यादा स्टार्ट सिंबल हो सकता था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट यहाँ पर मैंने सेट टर्म्स यूज नहीं किया है. आई एम ओनली यूज द स्टार्ट सिंबल. मीन्स किसी भी ग्रामर में एक स्टार्ट सिंबल का होना मैंडेटरी है. बिना स्टार्ट सिंबल लिए हम लोग कभी भी स्ट्रिंग तक पहुंच नहीं सकते या फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या ये ग्रामर को स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है या कुछ जनरेट नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन एवरी ग्रामर देयर शुड बी अ वन, at least one non-terminal, and which could be a start symbol. Are you getting my point? So similarly about the T, I am talking about it is a set of terminals. Means यहाँ पर मैंने टर्म्स कौन सा यूज किया है? सेट. और कोई भी सेट एम्प्टी भी हो सकता है या सेट में कोई एलिमेंट्स हो भी सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स है, दैट इज द ए एंड बी. Similarly about the N, what we are saying, this is the set of non terminals. Of course non terminals को हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पर एक टर्म्स यूज हो जाएगा. N can never be a, N कभी भी फाइन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रामर में एक स्टार्ट सिंबल का होना मैंडेटरी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड S belongs to, तो S है, S हमारा कैपिटल लेटर है जो कि स्टार्ट सिंबल है ग्रामर का, और कैपिटल लेटर है, और कैपिटल लेटर से हम लोग हमेशा नॉन टर्मिनल को इंडिकेट करते हैं. सो S must belongs to, is that clear? But if I am talking about the terminal, then it could be a 5, it could be a empty, or you can write the 5. Terminal
सिंबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ बिग इशू। सिमिलरली पी इज द प्रोडक्शन रूल विच इज रिस्पॉन्सिबल, इसको आपको अच्छे से समझना है, पी का मतलब होता क्या है। तो देखिए इस ग्रामर में ये जो एरे को थ्रू हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन रूल, कि एस से क्या जनरेट हो रहा है। हम लोगों ने अगर लिख रखा है एस टू ए बी, एस एरो ए बी, इट मीन्स फ्रॉम द नॉन टर्मिनल एस वी आर जनरेटिंग द न्यू टू नॉन टर्मिनल विच इज द ए बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको रीड करने का तरीका होता है कि हम लोग एक नॉन टर्मिनल एस से दो अलग अलग नॉन टर्मिनल को जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो सिंबल होता है जो मैंने बीच में इंडिकेट कर रखा है, इस सिंबल का मतलब होता है और, ठीक है ना, और। तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन रूल है। यहाँ पर एक तो प्रोडक्शन रूल ये है, दिस इज द प्रोडक्शन रूल 2 एंड दिस वन इज द 3। ऑफ कोर्स व्हाट डज इट मीन, अगर हम लोग कहीं पर भी लिख रहे हैं ए टू ए स्लैश एप्सिलॉन, ये दो प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन है, ए टू ए और यू कैन राइट ए टू। So this is the production rule 2 and this is the production rule 3, and that's why I have written over here this is the production rule 2 and this is the production rule. Similarly this is the production rule 4 and this is the production rule. अब मुझे इसके बाद लैंग्वेज फाइंड आउट करने होंगे। तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स में हमारे क्या क्या है, तो एक तो कैपिटल एस है, दूसरा कैपिटल ए है और तीसरा कैपिटल ई है। अब प्रोडक्शन रूल्स यहाँ पर ऑलरेडी इंडिकेटेड। तो आई होप आइडिया अबाउट द ग्रामर इज वेरी वेरी क्लियर। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि किसी भी ग्रामर के प्रोडक्शन रूल से स्ट्रिंग्स, क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं उसको कैसे फाइंड आउट करें। दिस इज आवर नेक्स्ट टारगेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक बात को मैं और क्लियर करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है T इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स, और कोई भी सेट एम्प्टी भी हो सकता है, एंड N इज द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स एम्प्टी नहीं हो सकते हैं क्योंकि किसी भी ग्रामर में एक सिंगल स्टार्ट सिंबल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो टर्मिनल्स नल हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए एक मैं दूसरा ग्रामर, मैं प्रीवियस वाले एग्जांपल में फिर से आऊंगा लेकिन आप इसको समझो। सपोज मैंने लिखा है एस टू ए बी एंड ए टू ए, or you just give over here, see S2AB, this is only a grammar I have defined। तो ये ग्रामर है जो मैंने डिफाइन किया है और इस ग्रामर में एक ही प्रोडक्शन रूल है। तो चलिए इस ग्रामर में अगर हम लोग स्टार्ट सिंबल की बात करें तो स्टार्ट सिंबल में S इटसेल्फ है, ठीक है ना। अगर हम लोग सेट ऑफ टर्मिनल्स की बात करें तो सेट ऑफ टर्मिनल्स हमारा एम्प्टी है, और सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स की बात करें तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स हमारे क्या क्या है, एस ए एंड। ऑफ कोर्स इस ग्रामर को अगर आगे फर्दर हम लोग मूव करें तो इस ग्रामर से क्या कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग तभी जनरेट होगा जब वहां पर कोई टर्मिनल्स होंगे। बट इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन कि अगर टर्मिनल्स होगा तो स्ट्रिंग डेफिनेटली जनरेट होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा ग्रामर है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्शन रूल है, और इस ग्रामर से अगर हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करें कि कोई लैंग्वेज जनरेट हो भी रहा है या नहीं, ऑफ कोर्स द लैंग्वेज विल बी अ एम्प्टी, ठीक है ना। मीन्स यहां से एम्प्टी स्ट्रिंग्स जनरेट्स, तो कोई स्ट्रिंग जनरेट हो ही नहीं रहे। और व्हाट द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन कंसीडर in the example number 3, what we can take S2AB and A2 epsilon and B2 epsilon. So in this grammar there are three production rules, 1 2 and 3. In the start symbol there is a symbol S. In the set of terminals this is the empty. In the set of non-terminals there are three non-terminals, that is the S, A and ओके। और अगर इस ग्रामर से हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करें, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी, देन इट विल बिकम ओनली एप्सिलॉन। कि देखिए हम लोग हमेशा कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट सिंबल से जनरेट करते हैं, और इससे क्या जनरेट हो रहा है, ए को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन डॉट,
ठीक है ना। और बी को भी हम लोग एप्सिलॉन से रिड्यूस कर देंगे, तो एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन ही होता है। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एप्सिलॉन को एप्सिलॉन से कॉन्कैटिनेट करेंगे तो इट विल बिकम एप्सिलॉन। अगर हम लोग एप्सिलॉन को किसी भी टर्मिनल से कॉन्कैटिनेट करते हैं तो इट विल बिकम अ, दैट क्लियर। दिस इज द बेसिक कॉन्कैटिनेशन मेथड। तो इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाले स्ट्रिंग्स हमारे क्या है, दैट इज ओनली अ। सिमिलरली, if I'm just giving you another example, that is the example number, so example number 4 पे मैंने आपको क्या दिया है, s2 ab and again a2 aa plus a and b2 b। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस ग्रामर को हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इस ग्रामर में सेट ऑफ टर्मिनल्स में क्या क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स में है ए कॉमा, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स में क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स में है आपके एस ए एन, और स्टार्ट सिंबल में क्या है, तो दैट इज द ऑफ कोर्स एस। तो ये हमारा स्टार्ट सिंबल है जहां से हमको स्ट्रिंग जनरेट करना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी। ऑफ कोर्स दिस इज द ग्रामर जी एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी। तो क्या कभी भी मुझे कोई स्ट्रिंग मिल पाएगा यहाँ से। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, एस को रिड्यूस कर रहे हैं ए बी में। सपोज मैंने ए को स्मॉल ए में रिड्यूस कर दिया तो ये क्या बनेगा, ए बी। बी को मैंने रिड्यूस किया इसमें बी में, इससे। तो जितने बार भी आप रिड्यूस करोगे ये बी हमेशा रहेगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये जो बी है ये हमेशा रहेगा, ये कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मीन्स स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि अ सिंबल विदाउट नॉन टर्मिनल, मीन्स स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ terminals. So these things you have to remember. You have to remember. What is the things? Strings का मतलब क्या होता है? Whenever I am talking about the strings, it is only combination of terminal. और अगर किसी भी कॉम्बिनेशंस में नॉन टर्मिनल आता है तो वो कभी भी स्ट्रिंग नहीं माना जाएगा। सिमिलरली, तो अगर ये बी कभी भी हट नहीं सकता क्योंकि मैंने बी को किसी दूसरे टर्मिनल से रिड्यूस नहीं किया है, तो ये बी कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कोई भी स्ट्रिंग्स आएंगे, सपोज डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग्स, देन इसके साथ बी हमेशा अटैच होगा। और अगर ऐसा होता है तो इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगा that will be a, and that's what I'm trying to tell you कि कभी भी ग्रामर में सेट ऑफ टर्मिनल्स है, इट डजंट मीन्स द ग्रामर विल जनरेट अ स्ट्रिंग्स। if the grammar contains a terminals, more than one terminals or a single terminals, it doesn't indicate the grammar will always produce a string. There is a possibility you are just inserting the terminals inside the grammar, it will generate a empty string. Are you getting my point? Or it will generate nothing. That clear? तो इस तरह के प्रोडक्शन रूल्स को हम लोग बोलते हैं यूजलेस प्रोडक्शन। यूजलेस प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, यूजलेस यूजलेस प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि ऐसे प्रोडक्शन जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए। दैट क्लियर? The production which is not responsible to generate any kind of string, basically known as useless production. Clear everyone? See, useless production के बारे में हम लोग बाद में और भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन मुद्दा है, जो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, उसके बारे में सोचते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इस एग्जाम्पल को अब हम लोग सॉल्व करें। दिस इज द एग्जाम्पल विच वी हैव कंसीडर्ड। CO,
अब मैंने इस एग्जांपल में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द अबव। तो देखिए, लैंग्वेज को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने आपको एक सिंपल सा ग्रामर दिया है। ग्रामर क्या है? दिस इज द ए टू ए प्लस, दिस इज द वेरी सिंपल ग्रामर, ठीक है ना। और इस ग्रामर में बस दो ही प्रोडक्शन रूल है। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन रूल एंड दिस इज द सेकंड प्रोडक्शन रूल। ए इज द स्टार्ट सिंबल। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी। तो देखिए, लैंग्वेज कैसे जनरेट होता है। तो हम लोग ए से, नॉन टर्मिनल ए से कौन सा टर्मिनल जनरेट कर सकते हैं। एक तो सिंगल बी जनरेट हो सकता है, बिकॉज द ए विल डिराइव द स्मॉल बी डायरेक्टली, the non-terminal a will derive the single b directly, so this strings can be generated. Next string क्या generate होगा, a2 a n। तो यहाँ से string generate हो रहा था सिंगल b, यहाँ से string generate हो रहा है ab। क्लियर। लीफ नोड पे मीन्स इफ यू आर क्रिएटिंग अ ट्री विच इज नॉन एज द पास्ट ट्री, पास्ट ट्री के बारे में बाद में भी डिस्कशन करेंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग अ ट्री and if all the leaf nodes are containing the terminals, then this is called the strings। और एक्सेस कैसे करेंगे, ऑलवेज गो फ्रॉम लेफ्ट टू, ट्रैवर्स करना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। और ये स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या जनरेट हो सकता है, ए टू ए और ए टू अगेन ए एंड दिस ए टू। यहां से स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रहा है, डबल ए। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर ओवर हियर, जस्ट ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स। यहां पर ये ए मींस ये जो नॉन टर्मिनल्स है ये अपने आप को कॉल कर रहा है। ये जो नॉन टर्मिनल्स है ये अपने आप को कॉल कर रहा है, मींस ग्रामर में कहीं ना कहीं रिकर्शन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, रिकर्शन। ऑलरेडी यू नो अबाउट द रिकर्शन इन द सी प्रोग्रामिंग। रिकर्शन का मतलब क्या होता है, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। Okay, similarly in case of grammar, whenever a non-terminal will call itself, then it is called the recursion। is that clear? तो अगर ये रिकर्सिवली बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है तो कितने भी लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है, मीन्स वी कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ ए, वी कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ एज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एट द लास्ट मोमेंट जो हमारा ए है वो रिड्यूस किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। एट द लास्ट मोमेंट द ए विल बी रिड्यूस बाय द बी, मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, ए टू ए फिर इस ए को रिड्यूस करो तो ए टू ए फिर इस ए को रिड्यूस करो तो ए टू दी पावर 3 ए। इस तरह से अगर मैंने n टाइम्स रिड्यूस किया तो ये क्या आएगा, इट विल बिकम ए टू दी पावर एन ए। और इस ए को लास्ट में मैंने बी से रिड्यूस कर दिया तो क्या बनेगा, ए टू दी पावर एन। एंड दिस इज नथिंग बट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर वेयर n is greater than equal to, this is nothing but the language generated by grammar G। Why I have considered the n is greater than equal to 0? The reason behind is कि अगर आप n के वैल्यू को 0 करते हो तो स्ट्रिंग क्या जनरेट होगा, a to the power 0 b। what does it means, epsilon dot b, and it means single। whenever you are considering n is equal to 1 it will become a to the power 1 b, and if you are considering n is equal to 2 it will generate a to the power 2 b। and so here what we are trying to understand that a to the power 0 it basically means, तो कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो आपको जानने होंगे। whenever we are taking the 0 as a power of any symbol, input symbol, it always derive epsilon। so ये एक बेसिक फंडा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मिनिमम स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है स्मॉल b, and that's why we are assuming n is greater than equal to 0। so keeping these particular things you have to attempt this particular question। so इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है,
एस से क्या डिराइव हो रहा है, नॉन टर्मिनल ए एंड नॉन टर्मिनल, ऑफ कोर्स अगर ए बी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, yes or no? So similarly there is a symbol dot which is working over here. और डॉट का बेसिकली मीनिंग होता है कॉन्कैटिनेशन. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द कॉन्कैटिनेशन. सो अब आपको ये एनालाइज करना है कि नॉन टर्मिनल ए से क्या डिराइव हो रहा है. तो ए के प्रोडक्शन रूल को देखिए. नॉन टर्मिनल ए से हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, तो लाइक ए टू ए अगेन ए, इस तरह से अगर हम लोग n टाइम्स जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a to the power n a, and at the last moment this a can be reduced by the epsilon, so it will become a to the power n where n is greater than equal to 0. Similarly from the b part, what you can derive, from the b part you can derive bb, and from this b it will derive again b square b, and at the last moment इसको आप n minus 1 times ले जाओ, n minus 1 times, so it will become b to the power n minus 1 b, and at the last moment b will be reduced by, you just take the m minus 1, it will become m minus 1, ultimately it will become b to the power m where m is greater than equal to. Why I am considering m is greater than equal to 1? Please try to analyze this. Because from the non-terminal b you can directly derive a single b. That's why I have written here m is greater than equal to 1. But from the a you can directly derive the epsilon, and that's why I have written n is greater than equal to 0. And both are independent. दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एनी काउंटिंग ऑफ ए का काउंटिंग कितना जनरेट करना है वो इस प्रोडक्शन रूल्स पे डिपेंड करता है, और बी का काउंटिंग कितना जनरेट करना है वो इस प्रोडक्शन रूल पे डिपेंड करता है. और इसीलिए मैंने ये दोनों सिंबल अलग अलग कंसीडर किया है. दिस इज द सिंबल n एंड दिस इज द सिंबल. So ultimately what language we are producing, we are producing a dot b, and from the a we are getting this, and from the b we are getting this. अब इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है. क्या करना है? कॉन्कैटिनेट करना है. So please try to understand over here. We have derived s2 a dot b, so we have derived s2 from the a we are deriving a to the power n is greater than equal to 0, and dot. From the b we are deriving b to the power m where m is greater than equal to 1. So once you will concatenate both, what it will derive, a to the power n b to the power m where n is greater than equal to 0 and m is greater than equal to. This is the final language generated by grammar. Clear everyone? And we are deriving this language from the start. We are deriving this language from the start. Okay guys, this is the series, so just don't worry. Just I have given you the basic introduction about the grammar today. Why I am saying the language which is deriving by the grammar should be with respect to the start symbol. This is again a question. There is a question mark कि कोई भी लैंग्वेज जो भी आप जनरेट कर रहे हो ग्रामर से वो स्टार्ट सिंबल से ही हम लोग क्यों ले रहे हैं. तो ये अगेन हमारा एक क्वेश्चन मार्क है. इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो हमारे साथ इस क्लास में जुड़े रहिए, और कल जब मैं आऊंगा तो कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे बारीकी से, और इस क्वेश्चंस के आंसर को भी समझेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटेड विथ योर गेट एग्जाम. So my dear friends, that's all for today, and don't forget to use my code, that is the IFA. And if you are really liking this basic concept, then hit the like button. Okay, so before leaving this session, once again I will tell you, never forget to subscribe the channel, press the bell icon button to get all the notifications, and put your valuable comments. My dear friends, your valuable comments is very much necessary to inspire the other students, because once you will put your comments, the other students will get the attraction and they will also join this particular platform. So again, before leaving the session, again I will tell you, never forget to use this particular code to get the discount. So thank you very much. Stay happy. Good night.
stay connected, and tomorrow again we will meet at the 10 p.m. Okay, and tomorrow we will just extend the hour of the classes.